Swami Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnavindra ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivedanta ki jai, Sri Radha Krishna 𝒂𝒏𝒕 Sam Kund Radha Kund Giridharan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Swami Bhaktivedanta ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Swami Bhaktivedanta ki jai. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. O inhabitants of Vaikuntha, you are all sinless, but those within this material world, they are all karmis, acting piously or impiously. Both kinds of activities are possible for them, because they are contaminated by the three modes of nature and must act accordingly. One who has accepted a material body cannot remain inactive, and it is inevitable for one acting under the modes of nature to be sinful. Therefore, all the living entities within this material world are punishable. Karinam gunasangasti devaman nahi akarmaki. So, devaman, we have explained several times. Deha means his body, and ban means one who possesses. Ostathe bhatu. This bhat pratyaya is affixed when there is the meaning of possession. Therefore, Bhagavan. Bhava means opulence, and Ban means one who possesses. That is Bhagavan. So same thing, in the same process, Dehavan. Dehavan, every one of us, Dehavan. The dog is also Dehavan, he has got body. I am also Dehavan, every one of us. So, anyone who has got this material body, he cannot stop even for a moment working something. Nahi akarmaki. This is the nature. He must do. That's a child. Child is always restless. Similarly, child is the father of man. One who becomes father, the same restlessness. Because that is the nature. Nahi dehavan akarmaki. So if you are not engaged in good work, then you must act bad. That is natural. You have to work. Therefore, idle brain is devil's work. If you are sitting idly, then brain also will work, mind also will work, the bodily function will go. So, if you don't engage yourself in good work, then you must be engaged in bad work. And if you are not engaged in good work, and if you are engaged in, there are two things, good or bad. So, in one of them, you must be engaged. So, if you are not instructed or trained up to act in good work, then we must be doing bad work. Bad work means Maya, and good work means God. There are two things, God and Maya.
if you do not act in godly situation, then we must be acting in Maya's clutches. That is explained in the Chaitanya Charitamrita in a very simple verse. Hoya mayar das kori nana abhilas. As soon as I become servant of Maya, then I shall create so many rascaldom in the name of philosophy and science. This is going on. So-called philosophy and science means all rascaldom, bad one. It is very challenging word. But this is the fact. If we do not, take for example, there are so many scientists, so many philosophers, and so many hippies also, LSD men. Why this has happened? Because there is no good engagement. Some are passing in the name of so-called scientists and so-called philosophers, and some of them are hippies. But all of them are engaged in bad. Asat. Asat and sat. Sat means permanent. And asat means temporary. So we must know what is our constitutional position. That we do not know. We are sat, eternal. Therefore, we shall act in such a way that will benefit my eternal life. That is all. Therefore, the Vedas instruct, asato mam sadgama, don't be engaged in temporary activity, bodily. Bodily necessities means temporary. If I am child, my body is of a child's body, then my necessities are different from my father's necessities. So everyone is engaged in bodily necessities. Therefore it is said, 𝒍𝒐𝒂𝒚𝒔 and kārīṇāṃ gunasanga asti, infection. We have got this practical understanding. If your body infects some disease, then you have to suffer, and if your body remains unaffected by the poisonous, then you remain healthy. Therefore it is said, sambhavanti bhadrani viparitani ca ānava. Viparitani, viparitani is just opposite. Sambhavanti bhadrani. One is acting in auspicity and one is acting viparitani, just the opposite, inauspicity. In this way, we are becoming entangled. Life after life. Karanam gunasangasti. In other place it is said, karmana daivanetrena, as we are acting, auspicious or inauspicious, by higher supervision, higher consideration, judgment, we are getting different body. Otherwise, why there are so many varieties of body? This is the cause. One is getting auspicious body, one is getting inauspicious body. But there is one opportunity that if you want to change materially your auspicious or inauspicious position, that cannot be done. It is fixed up. It cannot be done otherwise. Suppose a man has got a nice body, a dog has got inferior body,
you cannot change bodily, you cannot make a man dog or a dog man. That is not possible. But spiritually you can do. Spiritually, a bad man or bad dog can be elevated to the highest perfection. Therefore, the conclusion is, if you act spiritually, then it is Bhadrani or auspicious. If you act materially on the bodily consciousness of life, that is inauspicious. This is the conclusion. And that is being watched by the authorities, as we have already explained, the witnesses. God is the original chastiser or awarder, but there are so many witnesses that we have already discussed. Surya, Agni, Kha, Marud, Deva, Soma, everywhere it is thoroughly watched. So we must be very careful that we have got this human form of body, how to act. The act means, first of all, you know what is your position. That is the first instruction in the Bhagavad Gita, that your position is that you are not this body. Your position is that you are the proprietor of the body, you are spirit soul. If people are not educated on this understanding that the soul is different from body, that is, beginning of education is wrong. Therefore, whatever further advancement of so-called education is wrong. Because the basic principle is wrong. So the Krishna consciousness movement means they want to educate people, rectifying the basic principle of misconception. I am body, I am American, I am Indian, I am fat, I am thin, I am black, I am white. All bodily concept. This has to be removed, first of all. Then the Shastra says that if one is in the bodily concept of life, then he is no more better than an animal. No better than an animal. 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 𝒉𝒎𝒐. We have discussed many times. This bodily concept of life should be, first of all, removed. We must be enlightened. Otherwise, if we act on the bodily concept of life, then not Bhadrani, not auspicious, everything is inauspicious. Viparita. Sambhavanti hi Bhadrani viparitani cha ananta. Karina. Karina means one who is working. Nobody is, because dead stone, that is sitting idly. But even a small ant, it is also working. That is the difference between matter and spirit. So we cannot understand this difference. What is the difference between matter and spirit? Why the big mountain does not move? Because it is dead matter. And a small ant, it moves. Why it is so? That is the difference between matter and spirit. Why you are misunderstanding that the spirit is also matter? It is coming from chemical. This miseducation is going on, that spirit is also chemical composition, although I cannot experiment it by mixing chemical, producing. So, under this misconception of life, we are simply acting inauspiciously. Why inauspiciously? Because we are working blindly. We do not know what is my next life. I do not believe in next life. I believe or not believe, next life is there. As the child has his next life, the boy has his next life.
The youth has his next life. Similarly, the old man has got his next life. You believe or not believe, you have to accept next life. Bhashangsu chinnani yatha vihaya. This is real education. You have to accept the next life. Now, what kind of next life you will get, you have to prepare in this life. That is auspicious. That is bhadrani. And if you don't prepare for the next life, irresponsible, just like a street boy does not take education because he has no idea of next life, but his father, his mother is anxious that my son's next life, future life will be spoiled if he does not take education. They are anxious. Similarly, the father and the mother, the guru, the friend, everyone should be actually well-wisher of his friend, dependent, when he gives spiritual education. Then he is friend. Otherwise, they are enemy. Gita na sasat, janani na sasat. The Shastric contraception means that if you cannot educate your son how to stop repetition of birth, then don't become a father. Don't become a mother. This is Shastric. Don't become a guru. Don't become so on, well-wisher. If you cannot stop, how it can be stopped? Unless there is spiritual education, unless one is not spiritually enlightened, you have to undergo the process of birth, death, old age and disease. You may talk very highly or foolishly, but the process of nature, 𝒍𝒂𝒚𝒔, that you cannot stop. Therefore, any education which does not give enlightenment on the subject matter of how to stop death, they are all foolish talking. This is the conclusion. Not bhadrani, abhadrani. Sambhavanti bhadrani viparitani chanada karina gunasangasti gunasanga. Therefore, the Krishna consciousness movement is trying to give the association of goodness. There are three gunas. Just like in a brothel, they are giving the association of darkness. Similarly, this Krishna consciousness movement is opening so many centers to give the facility to the people in general, the association of goodness. That is the difference. Sangat sanjayati kama. If you associate with persons addicted to so many drugs or brothel men, then you become like that. And if you associate with the Krishna conscious man, then you become Krishna conscious, you understand what is your real position, what is the aim of life, how to stop birth, death, old age. This is the profit of Krishna consciousness movement. Actually, learned, educated circle, they are appreciating that government spends so much money for stopping the drug habit, but they have failed. But this Krishna consciousness movement have saved so many hippies and young men from this fallen condition of life. That is the practical. Anyone who has got intelligence, they will see to it. Therefore, this movement should be encouraged. Especially, I request my students that you push on this movement. Your country is very good,
let them become Krishna conscious, then everything will be Bhadrani, all of Bhadrani. Otherwise, your so-called big motor cars will create Abhadrani, Viparita. We don't discourage you to construct big cars, but it should be used for the kirtan party to go to village. Not to go to the brothels and liquor shop. Then you are doing. You can use it, all the facilities. The microphone should be used for spreading Krishna consciousness, not talking nonsense. This should be this. Everything is good, provided it is used for good purpose. Nirbandhe Krishna Sambandhi 𝒍𝒂𝒚𝒔. We are not such foolish person that this is material, this microphone, we shall not touch it. No, we are not so foolish. We are intelligent enough how to use it. That's all. That is Rupa Goswami's instruction. 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 Hare sambandhi vastuna 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕. Prapanchik means material, artificial abnegation or renouncement. That Mayavadi, they say. No, it is material. The other day we saw that Sushil Muni, they are Jains. According to Jain philosophy, they do not use any vehicle from going this place to another place. They will go by walking. That is their principle. But we are not following that principle. We are preaching Krishna consciousness. Suppose if I have to come to your country and if I say I will go by walking, then my life will be finished before preaching. We are intelligent. Now we have got this aeroplane. Take advantage of aeroplane, go in 3 hours to America. Speeding. That is our purpose. Therefore, sometimes people criticize that we are accepting all material things, still we are condemning material civilization. They accuse us. But they do not know that we do not distinguish matter and spirit. Anything which is used for Krishna, that is spirit. This house, if you use for making a club, dancing club, that is material. And if this house is used for chanting Hare Krishna mantra and dancing, that is spiritual. That is the difference. Because actually everything is emanation from the Supreme Spirit Soul, Krishna. Krishna says, 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 aprayam. What you say, material, that is also expansion of the energy of Krishna. So actually it is not material. But when you use it for other purposes than Krishna, that is material. You should know this philosophy, very nice. Therefore Rupa Goswami says, 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 Hare sambandhi. 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 sarvam. Everything has got relationship with God. We must know that nothing can exist without God. Therefore, in other sense, everything is God. So everything is God, then how it is material? It is material when it is not used for God. This is material. And if it is used for God, Krishna, then it is. Therefore, Abhadrani and Bhadrani, two things are to be distinguished. How? This is the process. Try to engage everything in God's service. Then it is Bhadrani. And as soon as it is being done for your sense gratification, then it is Abhadrani.
Try to understand. Two things are there. Sambhavanti vadrani viparitani chana. Karinam gurasangasti vihovan na jakarmakrit. Everyone has to work. Nobody can avoid work. But on account of ignorance, one works in darkness, and on account of light or enlightenment, one works in light. So we have to work in light. This is light work, Krishna consciousness. Bhakti. 𝒍𝒑𝒏𝒕 bhakti yogena 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 sagunan samatita itan brahma bhuyaka. There is said gunasanga, infected by the modes of material nature. But Krishna says, anyone, 𝒍𝒑𝒏𝒕 bhakti yogena. 𝒍𝒑𝒏𝒕 without any stoppage, 24 hours, if one is engaged in devotional service. 𝒍𝒑𝒏𝒕 bhakti yogena 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔, serving Krishna, then he is no more in the gunasanga. Here it is said gunasanga, infection of the material qualities. So if one is 24 hours engaged in Krishna's service, he is no more in touch with these three gunas. Otherwise, he will be in touch with the guna, defined gunas, and he will be infected, and you will have to, just like if you infect some disease, you have to suffer from that particular disease. This is going on. So, Bhadrani, auspicity or auspicious activities is this, devotional service. Be engaged always 24 hours in devotional service. There we have got program, early morning, 4:30 to up to 9:30 in the evening. This is all auspicious activities. We are giving chance people, come here and join this inauspicious activities so that you'll be saved from this repetition of birth, death and old age. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. तो आज जो लेक्चर था श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट नंबर 44। तो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में शुरुआत कर रहे हैं देहवान, है ना, देहवान के बारे में बता रहे हैं। तो बताया कोई इसके बारे में कैसे, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या नेचर है देहवान, मतलब कि जिसको शरीर मिला उसको देहवान बोलते हैं। तो देहवान के बारे में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, कि क्या नेचर होता है भौतिक शरीर का। देहवान के बारे में क्या बताया। हम लोग सब देहवान है, नहीं है, कौन कौन मानता है देहवान है हम, है ना। तो देहवान का एक नेचर बता रहे हैं कि देहवान या फिर जिसके पास शरीर है वो कैसे कार्य करता है, वो उसके बारे में शुरू में बताया फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने। नाम माइक दो। वो मतलब निरंतर, मतलब वो कार्य करता ही रहता है, वो अकर्मकृत है, ऐसे श्लोक बताया ना, जातो तिष्ठत् कर्मकृत। तो शुभ कार्य अशुभ कार्य, तो या तो शुभ कार्य करेगा या तो अशुभ कार्य करेगा। तो जो एक बता रहे कि खाली नहीं बैठ सकता है, तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं किसका, जैसे बच्चे का, बच्चा खाली नहीं रहता। ऐसी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करेगा, या फिर अच्छा काम करेगा या फिर बुरा काम करेगा। इस तरह से प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। तो हम बोलते हैं बहुत सारे फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये किस प्रकार के कार्य में लगे हैं, ये कौन सा कार्य है इनका, ये किस में काउंट होता है इनका कार्य। जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और हिप्पीज़ हैं बहुत सारे, LSD मैन हैं, सब, तो इनके कार्य किस में काउंट होते हैं। माइक दो, माइक आप कहाँ देख रहे हैं।
इनऑस्पिशियस बता रहे हैं प्रभुपाद, विपरीतानी। हाँ, इनऑस्पिशियस। और एक और बता रहे हैं प्रभुपाद, असत। असत कार्य है ये। असत मतलब जो टेम्परेरी या फिर परमानेंट नहीं है, ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं वो। और हम लोग आगे प्रभुपाद इसमें कुछ बता रहे हैं कि इस इन्फेक्शन, कि हम लोग क्या है कि इन्फेक्शन हो गया, किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें क्या अलग अलग कार्यों में लगे। हम किस चीज़ से इन्फेक्टेड है हर कोई, तो हम उस चीज़ से इन्फेक्ट होने की वजह से या फिर उससे दूषित होने की वजह से हम अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगे। क्या इन्फेक्शन क्या है? नाइग्रेबू। अच्छा, माया के दास बने हुए। हाँ, माया का दास। तो माया कैसे इन्फेक्ट करती है? किसी को भी नाथ प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। हरि बोल, सही बोली, हरि बोल। तो ये 3 गुणों के द्वारा प्रकृति क्या करती है? उसको इन्फेक्ट कर देती है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे बीमारी नहीं, बीमारी कैसे होती है, किसी को उसका इन्फेक्शन लगता है फिर उससे बीमारी हो जाती है उसको। ऐसी 3 गुणों में से कोई ना कोई गुण हमें क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है और फिर हम उसमें ले जाते हैं उसमें। तो उसके बाद प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि हमें अलग अलग प्रकार की देह प्राप्त होते हैं, शरीर प्राप्त होते हैं, है ना। तो भौतिक रूप से हम किसी कुत्ते को या फिर है ना मनुष्य नहीं बना सकते, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप में बना सकते हैं। कैसे? हाँ, समझ रहे? डॉग की बॉडी है, उसको मैन की बॉडी में चेंज नहीं कर सकते, या मैन की बॉडी डॉग की बॉडी में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और कैसे कर सकते हैं? माइक बोलना जो बोलना है। कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक रूप से उसको प्रशिक्षित करके। बोल, है ना। तो प्रशिक्षित करेंगे उनको तो वो चेंज हो जाएंगे, ऐसा बताया गया। तो भौतिक संसार में जो शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें सबसे बड़ा दोष क्या है? क्या दोष है जिसकी वजह से प्रभुपाद इसको कंडेम कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या दोष है जो भौतिक संसार में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, उसमें शिक्षा दी जा रही है, तो क्या दोष है? सबसे पहला, सबसे दोष, बिगनिंग का दोष वही है, वही सारी जड़ वही है जिससे शुरू होती है। नहीं, और कोई अभी कौन हाथ ऊपर करना है? आपको चांस दिया जाएगा। आयुष हुआ बताओ। कि हमारी डेथ नहीं होगी। अच्छा बताया, आंसर पूरा नहीं। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस पू। वी आर दिस बॉडी। ये मेडिकल एजुकेशन की फॉल्ट्स की बिगिनिंग है कि वी आर दिस बॉडी, वो ये मानते हैं। वो शुरू में यही सिखाते हैं कि हम क्या हैं, ये शरीर हैं। और तो यहीं से पूरी जितनी भी एजुकेशन है शरीर के बेस पे ही होती है कि हम भौतिक शरीर हैं, भौतिक शरीर का पालन करना है, भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करना, सब कुछ करना है। तो सबसे बड़ा फॉल्ट यही है भौतिक एजुकेशन में। तो प्रभुपाद जी, दिस इज द बिगिनिंग एजुकेशन इज रॉन्ग। तो बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल इज रॉन्ग। तो बेसिक प्रिंसिपल है ये, वही रॉन्ग है कि हम ये क्या है, शरीर है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद इसमें समझा रहे हैं कि हमें इससे मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकलना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है। तो उसके बाद बता रहे हैं कि इसमें मैटर और स्पिरिट का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक पदार्थ में और एक जीवित वस्तु में, कैसे पता चलेगा। एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने ये। ठीक है मुकेश पू, थोड़ा बोलना, अच्छा बोलना है। इसमें उदाहरण दिया चींटी और पहाड़ का। अरे बोल, तो क्या समझाया उसमें, क्या बताया? इसमें बताया कि चींटी तो चल सकती है, पहाड़ तो स्थायी रहेगा। अरे बोल, क्या बात है। हाँ ठीक है, अच्छा एक्यूरेट आंसर दिया आपने। तो ये है ना, तो पहाड़ है तो वहीं पर रहेगा, भले ही इतना बड़ा पहाड़ है लेकिन चल नहीं सकता वो, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, सो अंडर दिस मिसकॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ वी आर सिंपली एक्टिंग इनऑस्पिशियसली। तो रियल एजुकेशन क्या है, तो एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि वास्तविक ज्ञान क्या है। तो क्या ज्ञान देना चाहिए हमें, तो दिस इज अ रियल एजुकेशन। किसके बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए हमें, लोगों को क्या ज्ञान देना चाहिए, किसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, क्या ज्ञान देना चाहिए ताकि लोग समझ पाए वास्तविक स्थिति को। तो मैं आपको लिए और आप बताओ, मैं कहीं पूछूँ। ठीक है,
देख के कि हम जान सकते हैं कि हम जो है पहले बच्चे थे, बड़े हो रहे हैं, फिर जवान हो रहे हैं, फिर बूढ़े हो रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, फिर अगला जीवन है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। हरि बोल। तो इसके बारे में एजुकेशन देनी चाहिए। ये रियल एजुकेशन है कि हमें अगला शरीर लेना है। जैसे पूजन होता है, अभी शरीर बढ़ रहा है, फिर अगला शरीर मिलेगा हमें, फिर अगले शरीर में फिर दोबारा जैसे कर्म करोगे आप वैसे शरीर मिलेगा। ये ज्ञान देता ही नहीं कोई। तो इसको एक और उदाहरण से समझा रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए हमें। तो एक उदाहरण दे रहे हैं फ्यूचर के बारे में कृष्ण गोपीनाथ को, कि अगर हम नेक्स्ट लाइफ या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कितना हमारे लिए हानिकारक है। तो इसमें एक पेरेंट्स का एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद जी ना, कि जैसे पेरेंट्स भी ना चिंतित रहते हैं अपने बच्चे का कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका फ्यूचर ना मतलब डिस्प्लॉय हो जाएगा मतलब। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि अगर हम इस लाइफ में सही से एक्ट नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट लाइफ भी। अरे वो समझ में आया। बच्चा जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, यहाँ पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं उसको, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि अगर नहीं पढ़ेगा तो इसको न नौकरी मिलेगी न कुछ मिलेगा उसको, और क्या परेशान रहेगा ये। तो वो देख पा रहे हैं। ऐसे ही हमें देखना चाहिए कि इस जन्म में अगर भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जन्म में क्या है, हमारा जीवन ऐसा ही होगा, पशुओं का जीवन है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो वरना अगर ऐसा नहीं सोचते अगर उसके परिवार वाले, तो उसके शत्रु हैं वो। अगर उनको आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं देते, बस सिर्फ भौतिक एजुकेशन देते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अदरवाइज दे आर एनिमी। तो शत्रु और कोई नहीं, वही है, उसके माता पिता ही शत्रु हैं उसके, अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान या भक्ति में आगे नहीं बढ़ा रहे, ऐसा बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं फिर उसके बाद कि ये जितनी भी हम भौतिक चर्चा करते हैं है ना, तो वो मूर्खों के समान है। मूर्ख लोग जैसे बात कर रहे हैं ना आपस में, उनको समान है। कब है, कब वो मूर्खों की सभा कही जाती है, तो मूर्ख लोग मिलकर बात कर रहे हैं। कब कब उन बातों को बताया जाता है कि हाँ ये जिससे फुलिश टॉकिंग प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कब कब कहलाती है वो, किस बारे में चर्चा करना। तो वो इसको वो दैट्स ऑल, दैट्स इज कंक्लूजन। ये कंक्लूजन है कि अगर हम इस बारे में एजुकेशन नहीं दे रहे, इस बारे में बात नहीं कर रहे और चर्चा कर रहे हैं कुछ भी किसी विषय पे भी, तो वो फुलिश टॉकिंग, मूर्खों की वार्तालाप है वो। कब मूर्खों की वार्तालाप कब कहलाती है, आपने ठीक प्रफुल्ल बताया। वो अगर कृष्ण भावनामृत के बारे में शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो मूर्खों की बातें हैं। अरे वो तो क्या प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अगर कि therefore any education which does not give enlightenment on the subject matter how to stop death, है ना, कि कैसे मृत्यु को रोका जाए, है ना, कैसे कृष्ण भावना आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में बात नहीं कर रहे तो क्या है वो मूर्खों की बातें कर रहे हैं प्रकाश में। तो हमारा जो कृष्ण भावना आंदोलन है वो सबसे बड़ा फायदा दे रहा है लोगों को। कैसे, दिस इज गिविंग प्रॉफिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। ये हमारा प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट दे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है हमारा कृष्ण भावना में आंदोलन। कैसे दे रहा है वो, क्या कार्य कर रहा है ISKCON, ये सबसे बड़ा बेनिफिट सबको मिल रहा है। क्या बेनिफिट दे रहा है, हाँ मुकेश वो कृष्ण भगवत में ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या कहते हैं कि हमें कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। और जो प्रभुपाद जी ने आगे जाके हैप्पी को हैप्पीस बना दिया था, वही उन्होंने वही वो दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं सबको। अरे वो तो इसमें प्रभुपाद जी और इसमें बता रहे हैं कि हम अगर कृष्ण भावना भक्तों का संग करते हैं और उनके साथ रहते हैं तो हम अपनी वास्तविक जो स्थिति है उसको जान सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कैसे बचना है, इससे कैसे भगवान का भक्त बनना है। तो ये चीज़, ये हमारा प्रॉफिट दे रहा है क्या, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इस चीज़ को बता रहा है। नहीं तो सब कुछ क्या है, अभद्राणी है। तो उसके बाद प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अभी क्या है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, वो साइंटिस्ट लोग बहुत सारे इन्वेंशन कर रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, है ना, फ़ोन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक साउंड जिसमें मशीन बना रहे हैं। तो वो कब भद्राणी कब कहलाएगी वो, कि भद्राणी मतलब अच्छा है ये, कि हाँ ये सही है इनका। दिनेश वो इसको अगर हम कृष्ण की सेवा में यूज़ नहीं करेंगे तो हाँ। और लेकिन एक उदाहरण भी दे रहे साथ में, ठीक है, सही, अच्छा बताया आपने। एक उदाहरण प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि गाड़ियों को कैसे यूज़ करना चाहिए, गाड़ियों को। माता जी को कीर्तन पार्टी के लिए
तो कीर्तन पार्टी के लिए नहीं, बस पार्टी, कीर्तन पार्टी, इन सब के लिए हरि बोल, है ना। तो इनके लिए यूज़ करना चाहिए। तो प्रपोज करें यहाँ पे ऐसा नहीं कि लिकर शॉप, है ना, ब्रोथल, उसमें कि हम लोड कर लें और वो लिकर शॉप के लिए लेके जा रहे हैं, लिकर उसके लिए, है ना। तो क्या बुक्स वगैरह लोड करके संकीर्तन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? बसों को यूज़ करना चाहिए। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे, है ना, कृष्ण के संबंध में उस चीज़ को उपयोग करेंगे तब वो क्या है। तो एक और उदाहरण दिया प्रभुपाद ने सुशील मुनि का। क्या उदाहरण है? एक जैन फिलोसफी है, जैनिस्ट है वो, तो वो सुशील मुनि, उनके उदाहरण से प्रभुपाद ने क्या समझाया? ठीक, कौन जो अभी तक नहीं बोला? आप लोग अरे बोलो। जी वो जैन का एग्जांपल देते हैं ना, जैन का एग्जांपल देते हैं कि वो लोग अपना फिलॉसफी रखते हैं कि मुझे व्हीकल यूज़ नहीं करना है, पैदल चलेंगे वो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम एरोप्लेन भी यूज करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तुरंत अमेरिका पहुंच जाओ फिर प्रचार करो। और कहीं ऐसा हो कि हमें अमेरिका पैदल आना हो या जाना हो तो फिर मेरा लाइफ ही ख़त्म हो जाएगा प्रचार करने से पहले। हरि बोल, सही बोली, हरि बोल। तो ये तो प्रभुपाद करें, लेकिन मेरे को तो लोग कहता है अच्छा फिर तो इसमें लोग बोल सकते हैं अच्छा पहले तो तुम लोग साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज करते हो, उनके बारे में बुरा भला बोलते हो और उनकी यूज़ वो भी इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको कैसे काट रहे हैं प्रभुपाद? है ना। एक तो आप कह रहे हो कि साइंटिस्ट बेकार होते हैं, ये सब ऐसे हैं, ये है, और लेकिन उनकी वस्तुओं को यूज़ कर लेते हो, है ना। तो इसे कैसे काट रहे हैं? कोई जो अभी तक नहीं बोला? राधा रमन बू बोलिए। ठीक है, और कौन बोलना चाहता है? आयुष को। जो साइंटिस्ट ने बनाई है और अगर वो चीज़ भगवान के यूज़ में आ रही है तो वो भद्रानी, और अगर उसका सही यूज़ करना है तो अगर उसे भद्रानी बनाना तो उसे भगवान के यूज़ में लाना पड़ेगा, तो उससे सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद इसमें कुछ और बताया आदत नहीं। जो भी चीज़ मैटर है अगर वो भगवान की सेवा में यूज हो रही है तो वो स्पिरिट हो जाती है, तो वो भगवान अरे से वो यही बताया प्रभुपाद ने कि दे एक्यूज बट दे डू नॉट नो कि दैट वी डू नॉट डिस्टिंग्विश मैटर एंड स्पिरिट, एनीथिंग विच इज यूज्ड फॉर कृष्णा दैट इज स्पिरिट। तो भगवान की सेवा में जो कुछ लगता है वो आध्यात्मिक हो जाता है ना, कुछ भी चीज़ हो। तो इसलिए हम जो भी लगा रहे हैं भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो हम वास्तव में सही यूज़ कर रहे हैं इसका ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो भद्राणी अभद्राणी दो वर्ड श्लोक में आए हैं। तो क्या भद्राणी क्या होता है और अभद्राणी क्या होता है? लास्ट में प्रभुपाद समझा रहे हैं इसको, ये भद्राणी कहलाएगा, अभद्राणी कहलाएगा। कौन बताएगा इसको? दिनेश। अभद्राणी वो चीज़ें जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, भद्राणी चीज़ें जो कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ करते हैं। अरे ओ ये था लास्ट। तो प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं, वो पढ़ूंगा मैं थोड़ा सा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस पे लगना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, और तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं तो हम बड़ी जल्दी कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी प्रोग्राम होते हैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 to 9:30 इवनिंग तक। तो सब ये ऑस्पिशियस है, भद्राणी है, तो इन कार्यों को करते हैं तो भद्राणी रहेंगे। और तो प्रभुपाद सबको इन्वाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, कम हियर एंड जॉइन दिस ऑस्पिशियस एक्टिविटी so that you will be saved from the repetition of birth, death, old age and disease, है ना। तो ये भद्राणी कार्य में लगना चाहिए। मैं थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।